recombinant retroviruses. We have explained a few times that phage particles, they can also be used to introduce foreign DNA into the host cell. कि इसमें हमें पता है कि वायरस जो है जब अपने होस्ट सेल के साथ एड्सॉर्प्शन करता है तो वो फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट कर सकता है। तो इसमें बाज़ दफ़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो बड़ी हाई होती है या रिलायबिलिटी जो है उसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो एक ग्रुप है वायरसेस का जिसको हम रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं and it is the retroviruses. So when retroviruses they can transfer DNA into the host cell, then this process it is called as transduction. And this process of transduction it can be carried out in vivo, that is in the living cells, or in vitro, that is under laboratory conditions, by culturing specific cell lines. So, recombinant retroviruses, they are a natural tool for the transformation of the animal cells. So, early embryos, they have been transformed by using this group of viruses. And after transformation, again implantation, it can be carried out into a foster mother. Retroviruses, they have advantages over the microinjection technique. इसमें जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हम सिंगल कॉपी जो है फॉरेन डीएनए की वो सेल के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं कि एक वायरस है उसमें हमने अगर अपनी जीन जो है वो इंसर्ट की है तो एक वायरस जो है वो एक पर्टिकुलर सेल में सिंगल कॉपी जो है वो फॉरेन डीएनए की वो इंजेक्ट कर सकता है। तो इंटीग्रेशन के बाद जो होस्ट जीनोम है उसकी मोर और लेस इंटीग्रेशन पॉइंट से वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं होती। होस्ट जीनोमिक डीएनए इट रिमेन्स intact. So this is one of the advantage that single copy it can be inserted. But there are certain limitations as well. So limitation included that by using retroviruses we can transfer only a limited amount of the foreign DNA. कि इसमें sometime ये होता है कि वायरस टू वायरस जो कैपेसिटी है फॉरेन डीएनए को टेकअप करने की वो वेरी कर सकती है। कई वायरल पार्टिकल्स हैं लाइक मे बी बैक्टीरियोफेजेस या कॉस्मेट्स, उनमें जो फॉरेन डीएनए को टेकअप करने की जो एबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। रिट्रोवायरसेस में सपोज वो कम हो सकती है। तो इस तरह से ये वेरी करती है कैपेसिटी। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन डीएनए को टेकअप करने की कैपेसिटी जो रिट्रोवायरसेस की होती है एज कंपेयर टू माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक इट मे बी लो। सो a limited amount of the foreign DNA it can be transferred. Another limitation is that sometimes the viral genes that are present within the foreign DNA they can interfere with the expression of the host genome or even the exogenous genome. So gene expression it may be influenced. And sometimes what happens because of the viral origin of the DNA, that even foreign DNA if it is there, and sometimes the host modification system methylates because it is considered as a foreign DNA. So when methylation is there, then in this case the foreign DNA it may be silenced. It is not going to express. Another reason is that here all the cells they are not transfected. Some cells they may have foreign DNA in the
integrated state, some they are not going to receive any foreign DNA. So a type of embryo is formed which may be called as a mosaic embryo. So because of this reason, we are not going to favor the transfection that is mediated by retroviruses.